Good afternoon, everyone, and welcome to this discussion on the Swachh Amrit Mahotsav and the rally of youth for garbage-free hills, beaches, and tourist places. So, congratulations to all of you for this incredible participation. I have a few important announcements to make before we go ahead. Currently, there are many ULBs who are unable to join because the first 1,000 slots are already full. So what we are doing is we are recording this and all of it will be immediately uploaded on the Swachh Bharat YouTube channel, and you can watch it almost like within 5 minutes you can start watching it. Rest of the all the states are of course here. I would request the state mission directors, please take a follow-up meeting after this meeting with us so that it is you can discuss further, and in case there is any doubt you can escalate that to us. The second announcement I would like to make is please put on the chat box any question that you might have. आपके जो भी सवाल हैं आप उसे चैट बॉक्स में डालें, और at the end of the presentation we will open the floor for taking questions for about 15-20 minutes. Thereafter we will compile all of it and by tomorrow release a FAQ to all of you so that we can respond to all the questions. So I already see the first question. Can we change the team name? No, you can't change the team name anymore. The team names have gone and the team names are final. But some of you are still working on your captain's name. That's okay. We have given you a time for that. But team name is already final. So I will very quickly take you through the rules of the game, as we call it, since it's a league. All of you have received the copy of it last night. So for easy understanding, I'll quickly take you through what we are required to do. Full scale, please. So this is back. First slide, please. So this is the logo of Swachh Amrit Mahotsav. Whatever activities we will do during this fortnight from 17th September to 2nd October, we will use the logo of the Swachh Amrit Mahotsav. And this has been conceptualized with a lot of thought, and the tagline that we have finalized for this and disseminated with you, and you can see it here on the logo, Ek aur kadam swachhata ki aur. We have already traveled 8 years of an incredible journey, and now there is still a lot of work which remains to be done in the phase 2. And when we have embarked and 1 year is over of 2.0, let us take one more solid step towards achieving the vision of garbage-free cities and having a Swachh India. And hence, this entire logo has been designed. So kindly use the Swachh Amrit Mahotsav logo everywhere. I will also request that you can change your social media digital pages, your DP profiles, whatever branding that you're doing and activities that you're doing during this activity, please use this particular branding. Next. Now we come to the key Mohotsav activities. So when we say that it is a fortnight of celebration of sanitation, of urban sanitation, what are we planning? This will kickstart with the Rally of Youth for Garbage-Free Cities, with focus on beaches, hills, and tourist places. Followed by that, on 20th of September,
We will have the Swachh Startup Challenge award function. It is not just an award function, it will be an entire day long event at Delhi, wherein there will be a lot of interaction with various innovations, with startups in the waste sector, with other startups who are also unicorns and who are doing very well. We also plan to introduce two very special components here. One is, let's say there is a city has a challenge. If a city, you as the mission director, you as the commissioner, pitches before the startup industry that this is what my problem is as a startup ecosystem, give me a solution. That's known as reverse pitching. So we will start off this day with reverse pitching, where then we'll identify a few commissioners and district magistrates who have rural areas, and they will reverse pitch before the startup sector as to this is what I am doing, this is my challenge, and give me a solution. We start off with that and we end with the awards. So we have sent invitation to all of you to join us here at Delhi. I am waiting for the states to send their nomination, and let us have a full house on the 20th here. After that, on 26th, we will launch the Toycathon, the innovation challenge for making toys from waste. I will request all of you once again to disseminate as much as possible so that we get the best of entries during this period. Then from 30th of September, we will start the mega event build-up, and we will be sending invitations to each one of you to join us here at Delhi Talkatora Stadium from 30th onwards. And we have 2 days of exhibition of the best of technologies that have come up in the waste sector, experience sharing, showcasing of best practices, exposure to different intellectuals and practitioners from India and abroad who are working in the waste sector. And it will be 2 full days of activities. A lot of interesting things are being put in there. And we will have multiple cities and states sharing and presenting their best achievements. So that will be showcasing of all that has happened till now, as well as a lot of discussion that will go into what we need to do next. So 30th September and 1st of October, we will be sending you the invitations by hopefully next week. Details will follow. And after that, on 2nd of October, we will observe the Swachh Bharat Divas. We will issue the details subsequently. But from 2nd of October, we will roll out a national campaign on source segregation till 22nd. 23rd is Choti Diwali. Choti Diwali se pehle, we will sort of close the campaign on source segregation. So this is the calendar of Swachh Bharat mission, and which all of us together jointly are going to implement. Now let us discuss a little more in detail about the Rally of Youth. Next. So this is the introducing the first ever league, Swachhata League, which will be led by youth, and on one single day, every city team will be competing against each other, playing against each other rather, on the parameters of only Swachhata. And next we will be evaluating teams on certain parameters. I will discuss about that subsequently. Next, the entire purpose of all of it, be it Talkathon, be it Rally of Youth, be it our startup ecosystem catalyzing, experience sharing, etc., is for one purpose, and that is to fight against garbage. So we have conceptualized India versus garbage. I will request all of you to please use this in all your outdoor hoardings, banners, creatives, posters, whatever that you are using for dissemination and amplification of this event, even during the fortnight, India versus garbage. And below that, you can see the QR code which will take you to the page where volunteers can register. So the more you want volunteer participation, the more we need to disseminate this particular QR code
because this will carry you to the MyGov site where volunteers will register. Next. As all of you are aware, your city teams have been formed. The portal for the city teams with the details of the city teams will open from the 11th. We have requested you to identify a prominent team captain. Many of you know the registration of city teams is no more possible. The registration of city teams is already over. And the city will have a prominent captain. We had requested you we have requested you to identify a prominent youth person who can motivate people for large-scale participation. And the evaluation will be on 3 criteria. One, participation of youth, of people, which we will get to know from the MyGov site. Second, uniqueness of the activity, what exactly you are doing. And third, pre and post impact, which you will be sending it to us. We are thinking that around 10 teams at least will be selected, which will be the best teams. And these teams will feature here on the national event, at the national event on the 2nd of October. But from the kind of entries that have come, the details I will show, we are looking to having even more than 10 as awardee and winner cities, but we'll take it as it comes depending on the kind of response that we get from the cities. And the mode of application is only the MyGov portal. Next. More than 1850 cities are participating from across India. Next. We have, out of the 7 megacities minus Calcutta, we have the 6 megacities participating, 20 state capitals, and out of 61, 47 million plus cities are also participating, which is a very, very good participation. Other than that, next. We would like to complement these states where 100% and a very large percentage of cities are participating in the Swachhata League. Odisha has 100% of its cities competing and playing. Assam 99%, Chhattisgarh 97%, Punjab 96%, also Jharkhand 96%. These are the top states which have the highest number of cities playing. This itself is, I would say, a wonderful thing, because by that you have activities not just in 1 or 2 big cities, but in every city across the state you will find activities. So I think this itself is a great way to trigger participation. Next. This is the, in case you have to brand a flag, the logo of the ISL will have to be there, and we will send you the open file creative by which you can put your own city's name along with the ISL logo as well. All these open files in one folder will be sent across to you, neatly numbered. Yesterday we have sent a few. However, once again, we will name and number each of the creatives we are sending to you so that easily you can use them. We do not want that each one of you invests once again, spends time and effort doing a branding of your city, of your team name.
because we would also like to have some uniformity along with your unique team name. Next. So this is just the template. This is just an example. इंदौर का नाम इंदौर वॉरियर नहीं है, वो कुछ और ही अलग है. ये केवल एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको दिखा रहे हैं. कैप्टन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैप्टन को देखते हुए there will be youth engagement. So we would request that on your social media page, on the handle of your captain, the captain calls for participation. So for example, if Venkatesh Iyer is the captain of Incredible Indoris, then he can or she can, whosoever it is, can put an appeal in different platforms that please come, let's make our city clean. So with the brand of your captain, you can have your posters, you can have your digital platforms, and we will send you that detail. But everywhere it will be followed by the QR code so that people know where and how to join. Similarly, next, your celebrities as well as your brand ambassadors can call out and engage with people that I am playing, I am joining my city team. What about you? You also come and join. So आपके जितने भी म्यूजिक स्टार्स है या आपके रेडियो जॉकीज है, आपके यहाँ कुछ एमिनेंट सिटीजन्स है, youth leaders है, nothing political about it, but everybody is for Swachhata here. So they can send an appeal that I am joining for my team, so and so event is there. What about you? You also come and join. So this is a poster for your brand ambassador engagement. Next. This is again, or this is just an example. ये एक्चुअल पोस्टर नहीं है, ये केवल एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखा जा रहा है. आपका जो भी सिटी का नाम है, वी विल गिव यू द टेम्पलेट, और ये स्वच्छता लीग के लोगों के ऊपर आप अपना सिटी का जो भी नाम है वो नाम डालिए. I have been watching on the social media. Some of you have been coming with your own logo. अगर आपने आपका एक स्वतंत्र लोगो बनाया है तो उसे आप इसके साथ डाल सकते हैं, या फिर इसके बगल में जैसे कि ISL का लोगो रहे उसके साथ डाल सकते हैं. जिन शहरों ने अपना लोगो नहीं बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. हम नहीं चाहते कि आप खर्च करें, डिजाइनर्स को लें और इस पे समय आप स्पेंड करें. आप अपने सिटी का नाम केवल ISL लोगो के ऊपर ही डाल सकते हैं, और आप इसे अपने रीजनल लैंग्वेज में जरूर ट्रांसलेट करें. Regional language translation is very, very important. We will send you Hindi and English. However, we request you to please translate it, keeping the text intact and the QR code, etc. Please have it translated in your own regional languages. Next. Another thing is how to use this period. We are already yesterday, Honorable Cabinet Minister, Ministry of Housing and Urban Affairs has announced it officially open. So I would request each one of you to start building up the countdown. 8 days to go for ISL, 7 days to go, 3 days to go, 1 day to go, and start building it up on your social media pages, Facebook, Instagram, etc. And I would also request mission directors to please sit down with the cities, support the cities, especially the smaller ones, to open their social media pages. Many of them do not even have their social media handles. This is a good opportunity to open the handles, tell them what are the hashtags, tell them what are the accounts that are supposed to be tagged also. Because sitting here in Delhi, we will not be able to see what you are doing unless we see it in some platform. और वो जो platform है वो digital platform ही है.
That is why we will request all of you to please open it, open all your accounts and to keep updating your activities. Next. Now we come to the standard operating protocol. I have been seeing some questions about cost, etc. I will explain all of it. So the team registration is final. The number of teams is already final. We cannot now change the team names or the number of teams. Somebody said that a spelling was wrong. If there is an issue of spelling, then please have it corrected. Anybody wants to change a spelling which you have put where your city's name is incorrect, please have it corrected. The next step now is volunteers registration, and this is the most important step. And that is why this meeting today on a holiday between us and you. So from 11th of September, we start the volunteers registration. Volunteers registration के लिए जो creatives चाहिए, I have already shared that with you. From your side, you will have to take steps, be it discussion with colleges, NSS, NYK, Rotary, Nehru Club, different schools, different ITIs, whatever is there in your area, whatever, whichever university, whatever is there in that area, reach out to them. And we will be of course amplifying it here nationally, but it is more important that you amplify it locally. So be it your captain calling out, your ambassadors calling out, your city team calling out, that amplification is very important. And that portal will open from 11th of September and it goes on till 17th of September. ऐसा भी हो सकता है कि 17 तारीख जब आपका कार्यक्रम चल रहा है, many people will want to join on the spot. So on the spot join के लिए आप QR कोड का व्यवस्था रखें ताकि volunteers उसी जगह साइट पे भी जुड़ सके. And we will keep getting the numbers live on the MyGov portal. Now it is very important that all of you will have to complete the online form on the MyGov website by 16th of September. Upload all the pre-event, during event photographs and videos. Keep clicking pictures with using your phones and keep uploading it. And as I said, we will take the evaluation based on 3 criteria: impact, innovativeness, and the scale of the youth engagement. Every city can give only one submission. ऐसा नहीं कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सबमिशन दे दिया, किसी और यूथ ग्रुप में एक फाइनल सबमिशन दे दिया. Every city will just submit one submission which will be evaluated. And this submission must be made through the official email address of the urban local body. And the timeline of it is we are giving you 2 days post the event to make your event activity submission, which is 19th of September. These are what your evaluation requirements are. Next. Post-event, I said that there is a post-event form. You will have to fill that up. Hindi and English FAQ, please prepare it and share it with everyone so that they get it by tomorrow evening. And we discussed about the awards. Next. There are a few other things which I would request every city, not the communication, but the event requirements.
Okay. So, no, the audio was not there because I was on mute mode. We had to do some small corrections. We request everybody to use two hashtags. One is Swachh Amrit Mahotsav, one is Youth versus Garbage. These two hashtags may please be utilized in all your social media campaigns. And please use the ISL logo as I have already shared. And please tag the official account of Swachh Bharat Gov @Swachh Bharat Gov is the official account. Please tag that. I would strongly urge each of the commissioners and all the mission directors to give specific attention to one thing. हम लोग ये सारा कार्यक्रम स्वच्छता के लिए कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम के बाद हम इतना कूड़ा कर दें उस जगह को, पानी बॉटल, प्लेट्स, कप्स या पेपर नैपकिन्स एक्सेट्रा, that we set a bad precedence. All our events must be zero plastic and zero waste events. Very, very importantly, at all the sites, there should be no littering. लोग जब कार्यक्रम के बाद वहां से निकल जाए, वहां पे बिल्कुल कूड़ा नहीं दिखना चाहिए. The event should be a no litter event. Please take care of that. That will be a very, very important thing. As a message to the city, press will be watching, groups will be watching, everybody will be watching us. So please ensure that it is a zero waste, zero litter, and zero single-use plastic event. And also ensure live tweeting, I have already mentioned that, और zero waste, zero litter and zero single SUP को आप prominent जगह में you can sort of amplify that message that this event is a zero litter, zero waste, zero single-use plastic event, and plan accordingly. Very, very importantly, plan accordingly. पानी की जगह कहाँ पे होगी, खाने का जगह कहाँ पे होगा, मर्केंडाइज आपका कहाँ पे मिलेगा, टॉयलेट्स आपकी कहाँ पे लगेंगी, और उसके लिए जो आपका क्राउड मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके वॉलंटियर्स कहाँ पे होंगे, मान लीजिए फर्स्ट एड चाहिए होगा, फर्स्ट एड डेस्क कहाँ पे होगा, जिन जगह में आप लोग इसे क्राउडेड जगह में कर रहे हैं वहां पे ट्रैफिक की अरेंजमेंट्स क्या होंगी. आपका डिस्कशन आपके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस काउंटर पार्ट्स के साथ भी हो जाए ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था पे आप थोड़ा सा काम करें. द सिटी शुड नॉट सफर फॉर आवर एक्टिविटीज. वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी टू हेल्प आवर सिटी. That does not mean that we create inconvenience in any manner to the city. ऐसा ना हो कि हमारा रैली चल रहा हो जिसके लिए लोग ट्रैफिक में एक एक घंटा रुक जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. कहीं पे भी ऐसा एक एडवर्स इवेंट is going to show us in a negative light. So, no litter, no inconvenience to anyone. Please see that this is maintained. And for that, I request the commissioners and the mission directors very specifically to have preparatory meetings with relevant stakeholders for that. आप ऐसा भी कर सकते हैं, एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी आप फॉर इमरजेंसी आप रख सकते हैं. कोई भी आपको लगे कि आपको जरूरत है फॉर अ क्राउड, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम आप रख सकते हैं. जो लोग शाम के टाइम में करने की प्लान कर रहे हैं वो लाइटिंग का अरेंजमेंट करें. मे बी दे विल हैव मोर वॉलंटियर्स टू हेल्प. Also, I would request, please give focus कि हम लोग 17 तारीख के सुबह को जरूर इवेंट करें. केवल जो जगह में आप एंसिलरी सेकेंडरी इवेंट्स कर रहे हैं आप शाम को लें, लेकिन वी वुड एनकरेज दैट प्लीज हैव थिंग्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. 17 तारीख सुबह कार्यक्रम हो, बहुत अच्छा है. जिन शहरों में बहुत ऐसा कुछ प्लानिंग है जिसके लिए आपका पूरा दिन शाम तक आपका कार्यक्रम लंबा रहे, you can always plan. But for evening events, those who are planning, you have to make arrangements accordingly that are required for crowd convenience.
और एक सूचना मैं देना चाहती हूँ कि आप डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर ध्यान दें। अगर ऐसा कोई यूथ हु हैज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कम्स एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट, आप हेल्प डेस्क रखें, वॉलंटियर्स रखें और ऐसा एक्टिविटीज रखें जिससे इफ एनी यूथ who has special requirements and wants to engage comes over, you have facilities for them as well. Or toilets ka vyavastha will be very, very important because we are the sanitation team. Toilets cleaning, clean drinking water, hand washing, all of it. Please see that these kind of arrangements which are required for crowd is properly done. Next. After that, it is extremely important that information dissemination is done properly. For that, you can use, as I said, your celebrities. Please use your political leadership well. अभी हम लोगों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है वो आपके मेयर को भी पता चले, आपके वार्ड कॉर्पोरेटर्स को भी पता चले, आपके मिनिस्टर को भी पता चले, आपके सेक्रेटरीज, एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड एज टू व्हाट इज द प्लान। ऐसा ना हो कि आप एक इवेंट कर रहे हैं और उसी शहर के जो मेयर है उन्हें नहीं पता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू मस्ट have your political leadership driving this entire thing. Please request them to come, flag off, felicitate, have selfie points, and they would also like to participate. Cities के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके जो eminent citizens हैं, please invite them. They might not run, they might not do a plogathon, but they might want to sit and watch also. So please have facilities wherein others can come, sit, participate, and also enjoy. Next. Next. NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीसी कैडेट्स वॉलंटियर्स के तौर पे या फिर पार्टिसिपेंट्स के तौर पे एनवाईकेएस एनएसएस के साथ आप पहले से ही डिस्कशन करें। और जितने भी आपके क्लब्स हैं जो कि पॉजिटिव काम पिछले 8 साल में, आपको ये तो पता होगा कि विच आर द ग्रुप्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेस्टेड फॉर स्वच्छता, ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड। नेक्स्ट. Next. Please invite your local media, local radio channels, inform them. सिटी कैप्टन और सिटी कमिश्नर दोनों मिलके अपने शहर में जो लोकल मीडिया है, प्री प्रेस ब्रीफ भी आप दे सकते हैं, उन्हें सूचना दे सकते हैं कि कल या फिर मे बी 2 days प्रायर, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को आप उनको बुलाएं, आप प्री प्रेस ब्रीफ दें, इवेंट के डिटेल्स दें, ताकि उनके माध्यम से भी ये this information is further disseminated. You might like to do that. You may also request the local radio or local FM channels जहाँ पे है, जैसे बड़े शहर में है, they can also give live interesting updates on the entire event. Next. There are also some creatives which we will be, you can remove this. There are also some creatives that we will be sharing. जैसे अगर आप t-shirts बनाना चाहते हैं, we will send you the design of the t-shirt. और उसके साथ आप अपने शहर का जो भी टीम है या फिर शहर का नाम आप जोड़ सकते हैं. We will give you designs for the caps, for the flags. So these are the creatives that we will be sharing with all of you. And I will request mission directors, based on our letter to you, please immediately issue a letter to all the cities so that they can book the funds from SBM corpus of IC or CB. Both of it is allowed. And we have also said that in case आपने rallies, events, मास कैंपेन्स के लिए हमसे अप्रूवल लिया है फेज 1 में, पर आपके पास अभी भी कुछ पैसा बाकी है, एंड इट इज देयर इन योर unspent balance account in the state nodal account. You can also
spend that, because that is already an approved amount and some money is lying unutilized at your level. This is a good way of doing it. So these are the overall things that we had to share from our side. So we will be sending you, number one, the creatives for the overall branding, India versus garbage, ISL logo, and the overall creative branding, both in Hindi as well as English, number one. नंबर टू, जितने भी मर्केंडाइज वाले चीज है, जैसे फ्लैग्स हो, टी शर्ट्स हो, कैप्स हो, ये सारा लोगो हम आपको देंगे. आपके शहर में अगर आप फ्लैग बनाना चाहते हैं इस इवेंट के लिए, तो उस फ्लैग में कैसे आप आपके शहर के नाम को जोड़ सकते हैं, वो भी वी विल सेंड यू ऑल दोज क्रिएटिव्स. कैप्टन से कॉल टू द सिटीज, please take that creative, request your captain to give an appeal message so that people participate. The creative for brand ambassadors and celebrities to call and engage. Even you can request your mayor. The mayor can also say ki I am playing, somebody else may be a captain, but the mayor can say ki I am playing on this day, what about you? So it can come from any of them, any of the lead citizens who are there. Please make provisions for crowd management. Please engage local media so that we have enough information dissemination prior to the event. You can do it 2 days prior, 3 days prior. All of you can spend the money from fresh funds that will be available under IC and CB of SBM 2.0, or unspent balance that is there in state nodal account, already approved activities, but unspent balance. You can also spend that. So please take adequate preparatory steps. And from tomorrow, which is 11th, we start the registration process. And abhi meeting mein whatever discussion we had, we will be sharing the detailed PPT with you. Also, we will be sharing in Hindi as well as English all the creatives. Somebody is asking again on the funding part. I have already clarified it. I request all the mission directors to please issue letters immediately to the cities based on our letter and the protocol that we gave yesterday. On Swachhata Startup Challenge, you are most welcome to join us at Delhi. आप दिल्ली आ सकते हैं. 20 तारीख स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज का यहाँ पे पूरे दिन का कार्यक्रम है. आप आके जुड़ सकते हैं. Is there any other question that you would like to pose? You can raise your hands digitally and we will take a few questions. रजिस्ट्रेशन जितना हो गया बस उतना. नए टीम रजिस्ट्रेशन अभी संभव नहीं है. टीम्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. कार्यक्रम शुरू होने से पहले उसके पिक्चर्स, कार्यक्रम के दौरान उसके पिक्चर्स और कार्यक्रम के बाद उसके पिक्चर्स आप लोड करें, ताकि आपका इम्पैक्ट, आपका जो स्केल है ऑफ योर इंटरवेंशन हमको यहाँ पे पता चले और आपकी इवैल्यूएशन इसी बेसिस पे होगी. मैडम एक्सक्यूज मी मैम, असम से मिस्टर दास बोल रहा हूँ मैम. यस मैम हम लोग का असम में तो बीच बीच और हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस सारा यूएलबी में नहीं है, इसलिए कैन यू गो फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरिया? कोई बात नहीं, आराम से कीजिए. सेकेंड पॉइंट इज दैट हमारे टीम का नाम दूसरा दूसरा हो गया. कैन यू अलाउ टू चेंज द नेम्स? क्या नाम चेंज करना चाहते हैं आप?
यूएलबी का नाम इधर में रह गया, हम सोचा था तो लोग दूसरा दूसरा अच्छा अच्छा नाम दे देगा, इसलिए सर। दूसरा दूसरा अच्छा अच्छा नाम फिर से करेंगे जब तब देंगे। अब अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग की दिक्कत है, वो यस परिवर्तन मैम। के लिए वी विल अलाउ यू, बट पूरा पूरा चेंज करना दैट इज नो मोर पॉसिबल बिकॉज इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड द डेटाबेस। तो अच्छा मैडम अच्छा हमारा, नाम और अच्छा अच्छा नाम अगली बार दे देना। ठीक है। Our honorable minister has already taken a visit with all district magistrate regarding celebration Swachhata League. वेरी गुड। एनी अदर Thank you, ma'am. स्टेट? PPT will be shared. State IC fund, please contact your respective state governments. Yes, you can change your team captains. टीम कैप्टन की जो सूचना आपने हमें दी है, कई सारे टीम से ये रिक्वेस्ट आया है कि आप कैप्टन का नाम चेंज करना चाहते हैं। कैप्टन नेम्स फाइनल डेट इज, so you can change your captain's name, और जो आपका पोस्ट इवेंट के बाद आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आप कैप्टन के डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में आप कैप्टन्स चेंज कर सकते हैं। नो न्यू रजिस्ट्रेशन। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये एक्टिविटीज एसएस में काउंट करेंगे कि नहीं? ये एक्टिविटीज आपके सिटी को ज्यादा साफ करेंगी और hopefully youth will come forward to keep participating, and yes, they will be counted in SS, but we are not doing it for SS only. We are doing it to trigger Jan Andolan, not only for SS. Allocated areas मतलब क्या? Allocated areas आप चेंज करना चाहते हैं मतलब क्या है? आपका जो सिटी है वही एरिया है, सिटी विल हैव अ सिटी नेम, allocated area और कुछ नहीं है अलग। इसका आउट MyGov registration link, MyGov registration link has been given in the QR code that will be put here, that will be put in every possible place. You will find it everywhere. Ma'am, is it mandatory to select tourist places or can we select any other uncleaned areas also? टूरिस्ट प्लेस का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई नेशनल टूरिस्ट प्लेस आपके सिटी में नहीं है, लेकिन हर शहर में ऐसा कुछ जगह है जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, है ना? Yes, ma'am. हर शहर में ऐसा एक दो जगह है जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, तो आपके शहर के लिए वो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है? वी डोंट हैव अ नेशनल लेवल टूरिस्ट प्लेस। Because normally tourist places will be clean only, ma'am. So that's what our idea. Already the tourist places we are maintaining well. So again, if we You are plan the maintaining, activity, not your youth. yes, Corporation is maintaining, city is yes, ma'am. maintaining, youth is Yes, not ma'am. maintaining. How can you Okay, ma'am. bring the youth to substitute your role for one day so Okay, that ma'am. they understand, Done. Okay, ma'am. Okay. Thank right? you, ma'am. Right. और Thank you. आप ये नहीं कह सकते कि उस एरिया का सब ड्रेन एकदम साफ है, उस एरिया का हर एक बुश प्रॉपरली कट है, उस एरिया में आपको एक कहीं पे बूंद कीड़ा नहीं मिलेगी, कूड़ा नहीं मिलेगी, ये आप नहीं कह सकते हैं, राइट? Yes, Somewhere ma'am. Yes. something is happening. So why can't the youth substitute your workforce for one day? Sure, ma'am. Sure, ma'am. That is the purpose. Okay, ma'am. Thank you. Above 10 lakh में कितने प्रोग्राम करने हैं? Above 10 lakh means what? Above 10 lakh cities, million plus cities. ऐसा कुछ नहीं, कितने प्रोग्राम करने हैं? एक सिटी कैन हैव maybe 2 locations, 3 locations, 1 location. ये आपके ऊपर निर्भर है. The idea is youth must come to do the work of Swachhata for one day. That's all.
That is a simple outcome. Somebody is asking कि ये कार्यक्रम का outcome क्या है? Outcome is we are expecting जो काम आप हर रोज हर दिन करते हैं वो काम एक दिन के लिए एक रोज के लिए जो आपके शहर के युवा हैं वो करें. Yes, you can take youth from college and institutions, लेकिन आपको QR कोड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करनी होगी. तभी हमको पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन कितना हुआ है. हाँ, उज्जैन ने एक लोगो लॉन्च किया, मैंने अभी देखा, बहुत अच्छा लोगो है. आप उसको ISL के साथ जुड़े. तो अभी जैसे मैंने आपका नाम देखा था, आपने यूज किया है उज्जैन का. क्या नाम आपने दिया था? मैंने अभी देखा, 2 एलिफेंट्स एंड उज्जैन का लोगो. अवंती, अवंती वॉरियर्स. उज्जैन की टीम के नाम जो है वो अवंती वॉरियर्स है. तो अवंती वॉरियर्स विल कम बिफोर द ISL. ISL सेंटर में रहेगा. Avanti warriors will come here. You want to put your 2 elephants, you can put your 2 elephants at the side of it. Not a problem. सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस बार नहीं हो पाया, अगले बार करते हैं. अभी के लिए सिटी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि कहीं पे हमको सेकंड स्टेप पे आगे बढ़ना है. स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, आप किसी भी इवेंट के साथ इसको जोड़ सकते हैं. इसका जो ब्रांडिंग है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो आप यूज करें और किसी भी इवेंट के साथ आप जोड़ सकते हैं. लेकिन इस इवेंट का जो खासियत है कि एक दिन पूरे देश में जितने भी शहर हैं जो कि वॉलंटियर किए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उन शहर के जो युवा हैं वो स्वच्छता का कार्य करें. एंड दैट इज अ मैच. It is a match of sanitation played by the youth of the city. So as long as you can keep this identity intact, you can merge it with any event. इवेंट के फोटोज और वीडियोस पोर्टल के ऊपर आप लोड करेंगे और ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर किया जाएगा. अभी जो प्रोटोकॉल आपके पास जाएगी कुछ समय में, डिटेल प्रोटोकॉल इंग्लिश और हिंदी, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. कल तक ये सारी सूचना आपके पास होगी और क्रिएटिव्स के साथ. जो सिटीज, यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? आई रियली लाइक द सिटी. जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, चंद्रपुर, चंद्रपुर, चंद्रपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये जो सवाल है, ये अभी तक के जितने सवाल हैं उसमें से सबसे अच्छा सवाल मेरे हिसाब से ये सवाल है. जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो इसमें पार्टिसिपेट I can't read it. Where is that? Chandrapur. इसका I will look at it in a different way. But the reason I said कि ये सबसे अच्छा सवाल है, मे बी आप कंपटीशन के हिसाब से आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटी है आप जरूर करें. अपने सिटी में 17 तारीख को आप ISL की एक्टिविटी जरूर करें. कंपटीशन तो एक साइड में है, लेकिन अगर आपको सिटी में स्वच्छता के प्रति जन आंदोलन को आगे लेना है, I will strongly recommend registration or not, participation in the competition or not, please do that activity on the 17th. Any other question? Captains के name. What is the prize? What is the prize when the team wins? How will the selection be made? प्राइज जो है वो है 2 तारीख को यहाँ पे दिल्ली में एक नेशनल इवेंट का आयोजन किया जा रहा है
वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का प्लानिंग है, और जो शहर इसमें अच्छी प्रदर्शन करेंगी, दे विल बी इनवाइटेड टू दिल्ली, दे विल पार्टिसिपेट हियर, और उनका जो काम है, उन्होंने जो एक्टिविटी लिया है, वो एक्टिविटी को हम यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे, and the entire country will get to see what that particular city led by its captain did it. So the prize at this point of time is a national recognition in a national forum, and the entire country, everybody will get to see what you have done. How will the selection be made? Selection process जो है, selection का criteria we have already shared with you. इसके लिए एक अलग से jury का constitution we are doing. The jury announcement will be done 1 day prior to the event. 16 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि इस event का jury members कौन है, और jury will be monitoring this entire activity, और जो 1850 cities हमारे हैं, उनमें से जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स होगी, वो jury will decide that. Any other question? There is no target. So for a change, let's not go with targets. Let's enjoy the event. Let our youth enjoy the event. Let them understand that sanitation is part of our core activity. और इस पे जो core focus is स्वच्छता, और youth is going to do स्वच्छता. It is not just a game. आप यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ खो खो कबड्डी खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप ये गेम जो है, ये लीग जो है, ये स्वच्छता को लेके ही आपका कंपटीशन है. तो एक दिन के लिए उस जगह का जो यूथ है, दे विल बी डूइंग एक्टिविटीज ऑफ सैनिटेशन. जहां पे इलेक्शन के कोई कोड ऑफ कंडक्ट है और प्रोटोकॉल है, कृपया आप कंप्लीटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें. That surpasses any other protocol that we are issuing. Please issue a separate year for that. Anywhere where there is any kind of an election code of conduct or any kind of by-election, local kuch other issues hai, then don't do it the way we are telling, not at all. QR कोड के डिटेल्स आपको अभी दिया जाएगा. मॉनिटरिंग डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सी who is going up, what is coming down. ये आपको ही दिखेगा, MyGov पोर्टल में ये आपको ही दिखेगा. रजिस्ट्रेशन, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिलियन प्लस सिटी है, उसमें पार्टिसिपेशन नेचुरली ज्यादा आएंगी. जो छोटे शहर है, उनका पार्टिसिपेशन कम होगा. तो we are not going to compare a million plus with a small 1 lakh city, right? So cities as per its population, pro rata basis will be taken, proper weightage will be given. So do not worry अगर आपके पास 500 वॉलंटियर है और एक मिलियन प्लस सिटी के पास 25,000 वॉलंटियर्स है, it does not mean that the million plus city will win. Even you can win. So evaluation criteria has been made accordingly. कैप्टन, हाँ, आप चेंज कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट. बाउंड्री के बाहर, यूएलबी बाउंड्री के बाहर आप यह कार्यक्रम करना चाहते हैं, आपका यूएलबी संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो गया हो, तो आप बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं. मेरे ख्याल से बाउंड्री के भीतर अभी बहुत काम बाकी है हर शहर में. तो यूएलबी बाउंड्री, सिटी बाउंड्री के भीतर ही आप यह कार्यक्रम करें, तो सिटी पे एक अच्छा प्रभाव आएगा. अगर उसके अलावा भी आप बाहर करना चाहते हैं, तो ये आपका निर्णय है, लेकिन आप सिटी के अंदर जरूर करें. और कुछ SS 2023 markings. So yes, we can consider it for SS 2023 markings. वहां पे एक यूथ एंगेजमेंट, सिटीजन एंगेजमेंट का पैरामीटर है, तो इसे हम ले सकते हैं. बट एज आई सेड,
ये जो है इसका द इंटेंशन इज नॉट SS 2023 का मार्किंग्स. द इंटेंशन इज, एज आई सेड, द स्पिरिट ऑफ सैनिटेशन, नॉट एनी कंपटीशन SS. जिस क्षेत्र में टूरिज्म एरिया परिषद एरिया के बाहर है इसके इवेंट, वहां भी कर सकते हैं. सिटी के अंदर भी आप कुछ कर सकते हैं. अगर मैंने जैसे कहा कि आपका जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है वो शायद आपके सिटी के बाहर हो, लेकिन आपके सिटी के अंदर भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं. वो भले आपके पार्क हो या फिर आपका कोई सिटी का लेक हो या कोई भी एक ऐसा स्थल हो जहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं या फिर मार्केट एरिया हो. सो विच एवर एरिया यू थिंक हैज मैक्सिमम फुटफॉल, please do it in that area along with any other area that you want to. अब इतना लोगो हमने दे दिया, उसमें अगर आप फिर भी स्वच्छ सर्वेक्षण का लोगो जोड़ना चाहते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसमें स्वच्छ अमृत महोत्सव और ISL का लोगो जरूर यूज करें. इसके अलावा अगर आप SS 2023 का भी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं. कैप्टन कौन बनेगा, ऑफिशियल या एम्बेसडर, ये आप लोग निर्णय करेंगे. हम लोग चाहते हैं कि कोई युवा बने, ऐसा कोई युवा जो कि दूसरों को प्रेरणा दे सके. ऐसा ही किसी को आप कैप्टन बनाए. वो भले NGO के मेंबर हो, रेडियो जॉकी हो, स्टार हो, सिंगर हो, ऑफिशियल हो, कोई भी हो. Yes, all of you will get a certificate for participating. You can give incentive. इंसेंटिव आप दे सकते हैं. आपके युवा जो आ रहे हैं आप इनको कुछ भी इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन इंसेंटिव शुड नॉट बी फाइनेंशियल. Incentive should not be financial. Incentive should be could be a certificate, could be a recognition, could be selfie with your celebrities. Incentive should be these kind of motivators. टीम का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप केवल स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो. जी हाँ, आप IC फंड और CB फंड दोनों से आप इसका जो फंडिंग है आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक आप प्लान बनाएं, आपके मिशंस को भेजें, मिशन डायरेक्टर्स के पास सारे शहर का प्लान हो. अगर आप स्वच्छ भारत से पैसा खर्च करने की आपकी प्लानिंग है तो आपका प्लान आपके मिशन डायरेक्टर के पास पहुंचना चाहिए. अगर आपने टीम नहीं क्रिएट किया हो आप वॉलंटियर बिल्कुल जुड़ सकते हैं. अगर आपने टीम नहीं क्रिएट किया हो अभी तक, अभी आप क्रिएट कीजिए. भले आप ISL लीग में ना जुड़े इन द कंपटीशन, बट ISL की एक्टिविटी अपने शहर में जरूर कर सकते हैं. लिंक आपको दिया जाएगा. कैप्टन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इसका मैं कोई यस और नो सीधा जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आई वुड से प्लीज डू समथिंग विच इज आप पॉलिटिकल, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, विच शुड लुक. अगर आप सबको जोड़ के आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन इट शुड बी एज एपॉलिटिकल. इसमें केवल एक ही स्पिरिट है, वो है स्वच्छता की स्पिरिट. तो आप अपना कैप्टन उसी हिसाब से चयन करें तो अच्छा रहेगा. आपका टीम का जो डिटेल है और दूसरे टीम के डिटेल्स आपको कल से माईगव पोर्टल पे दिखना शुरू कर देगी. ये पोर्टल शायद चलेगी अराउंड 12-1, maybe sometime during midday. Sometime around midday the portal will start working, and you will be able to see your team details and other city team details in those portals. All terms and conditions and rules of the game have already been issued to the mission directors yesterday night, and I would request the mission directors to please disseminate these details to the cities.
प्लान इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं देना है. द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर प्लानिंग, आप 3 जगह में ऐसा क्लीनिंग एक्टिविटी करेंगे. यू आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन. इसमें आपका ये इवेंट का खर्चा है एक्सेट्रा. एक बेसिक नोट आपके मिशन डायरेक्टर के पास विद एन एस्टिमेट आप भेजें, तो मिशन डायरेक्टर्स नो that this is the kind of amount that is unspent and this is the kind of amount that will possibly be spent on this. Okay, so I think we've taken most of the questions and all of you are ready to play in the league. So thank you all of you. All the other details will reach you in some time. All the very best. Thank you very much.